Hey guys, this is Dipen from Pune and welcome back to DNA Vlogs. Today we're going to review this beautiful Fiat, again done by RASN Designs, Rohit. So guys, beautiful day, quite sunny out here in the winters, and we have this beautiful Fiat. It is a 1971 import class. I mean, that time it was imported. Fiat 1100D डिलाइट मॉडल है ये, एंड रिस्टोर हुआ है रोहित के पास. आपने पहला फ़िएट देखा ही रहेगा मेरे चैनल पे. आई मीन द टू फ़िएट्स अर्लियर, एक इलेक्ट्रिक फ़िएट थी अभी रिसेंटली जो डाली थी मैंने एक लास्ट मंथ में, एंड एक तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने एक वाइट कलर की फ़िएट डाली थी, वाइट एंड ऑरेंज शेड में. तो ये फ़िएट भी रोहित के पास ही तैयार हुई है. बहुत सी चीज़ें इसमें रोहित ने कस्टम किया है. सो इन अ वाइल आई विल शो यू उसने क्या क्या किया है. Paint is metallic black with multiple lacquer coats and all. You can see the shine out here. इस पे अभी सेरामिक कोटिंग होना है. अभी सिर्फ रबिंग और पॉलिश हुआ है बेसिक. गाड़ी जो तैयार होती है उसके बाद जो बेसिक रबिंग पॉलिश होता है वो किया हुआ है अब तक. इसके बाद नेक्स्ट वीक सेरामिक कोटिंग होगा. तब चांस मुझे मिलेगा तब आई विल गो एंड टेक सम शॉट्स फॉर रील्स एंड ऑल. तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट. सो एक पहले वॉक अराउंड लेते हैं, गाड़ी कैसी दिखती है पूरी ऑल राउंड से. इट्स रियली ब्यूटीफुल. आई जस्ट कांट टेक माई आईज ऑफ इट. बहुत मस्त लग रही है, बहुत मस्त लग रही है भाई. कमेंट्स में डाल देना आपको ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आई थी या वो ऑरेंज वाली. ऑरेंज वाली के लिंक्स भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा. लेट्स लुक एट द इंजन कंपार्टमेंट फर्स्ट. इसका पूरा बॉडी वैसे चेंज हुआ है और बहुत सारे पार्ट्स भी चेंज हुए रहेंगे बिकॉज इट इज़ फ्रॉम वे बैक फ्रॉम 1971. सो इट इज़ आई मीन बैक देन इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप द स्टफ इन मेंटेन कंडीशन. पार्ट्स वगैरह चेंज होते ही रहते थे. सो दिस गॉट अ बूस्टर ऑल्सो फॉर ब्रेक्स. यू कैन सी इट हियर. लुक एट दिस बिग हॉर्न, एंड एक म्यूजिकल हॉर्न भी है. So this probably I'll put it in the part 2. I've taken some night shots of the video of the car. उसमें मैं आपको sound of the horn, then light का throw and interior cabin का light कैसा है ये एक आपको second part में दिखाऊंगा मैं. And probably I'll add the flying shots, flyby shots of the car in the part 2. And, header is chromed, but I mean it is stock header. There's nothing specific or modified here. Even the carburetor and all is all stock. But I just wanted to show you how clean or neat, I mean I wouldn't say clean because गाड़ी everyday use होती है. Last 15 days it is painted and it is being used every day. But you can look at the finish. I mean it's close to OEM finish. It looks very neat and tidy, very well finished work. Nothing shabby as such, ऐसे बोलना चाहता हूँ मैं. सॉरी वी हैड टू चेंज द लोकेशन. वहाँ पे बहुत लोग आ रहे थे एंड बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि एवरीबॉडी वांटेड इन्फॉर्मेशन. सो अनलाइक माय फ्रेंड्स फिएट जो आपने पहले वीडियो देखा था, दिस डिक्की इज़ प्रीटी सिंपल. इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक सबवूफर है ऊपर, स्पीकर्स ऊपर ही है, एंड इसमें क्लॉथ इसमें फिनिश किया है इसको भी. रेस्ट इज़ वेरी सिंपल एट द डिक्की साइड. कमिंग टू दिस ब्यूटिफुल व्हील्स, तो पहले ये बता दूँ फ्रंट पे डिस्क है, रेयर पे ड्रम है. सो दिस कार हैज़ बीन मॉडिफाइड टू इंस्टॉल डिस्क ब्रेक्स. तो आपने वो बूस्टर भी अंदर देखा था अभी when I opened bonnet. So it has got disc brakes and wheels are 15 inch वाले प्लाटी के हैं, 10 spoke, and the tire is from Kenda. Radial size is 195/50 R15, which you can see here, and this is the pattern. Of course the same set goes behind. So main tire walls, the part, the inner wall that has been inner rim that has been made red, and the seats that have been made red. So this gives a very unique look to the car, very elegant look, very plush look. बहुत ही premium feel आता है कार को because of this finish. So along with the red seats and red rim, so even the rear drum, the rear whole drum set is red in shade, along with the front disc which is also disc का caliper जो है, even that is finished in red, the same red which is over here. Let's dive into the interior.
Door के panels are all finished in red, the same color as the seat covers, and the seat covers का trims is finished in white, which looks really nice. Look at the top, that is also finished in white. So again, I've taken a night shot, a night clip of this section where the car looks really nice at night. So that I'll post it in part 2. The flooring complete mattress is done in ribbed carpet, and some basic rubber 3D type mattresses, floor mattresses are added. There's a light also over here, okay, at the bottom, which again, you will get a good throw, or you'll get a good vision in the night throw video. Let's look at the front side also. Again, this is finished in red, obviously पूरा एक ही set है. Steering custom है. I don't know which brand, but it's a custom one. Looks good, minimalistic chrome है पूरे कार में, but ये अच्छा दिखता है. सेंटर कंसोल भी पुराने अपने फिएट्स वगैरह में देखे रहेंगे, तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. सिंगल डिन सिस्टम दिया है. यू गॉट वन चार्जर वेयर यू कैन पुट योर इन्फ्लेटर्स एज वेल एज दिस USB का ऑप्शन मिल गया है इसमें. एंड अगेन ये लाइटिंग भी आपको नाइट के वीडियो में बहुत अच्छा दिखेगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी पार्ट 2. दी कंसोल हियर इज ऑलमोस्ट स्टॉक, नथिंग स्पेशल हियर. इसको फ्रेमलेस मिरर पक्का दिया है, मतलब दिस इज द सेम विच वाज सीन लॉन्ग बैक इन द ऑरेंज फिएट दैट आई हैड शॉट. ये आई थिंक इज बीन पिक्ड फ्रॉम अमेजॉन. इफ आई फाइंड अ लिंक आई विल पुट इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. This also is finished in red, the shades, so this look really nice on top of white, one small patch of red, this looks really nice. Overall it is really well done, well finished, no complaints inside, very neat work, absolutely clean and tidy, nothing shabby out here. This is the good part of Rohit. He does the work very, it's a very quality work. One small additional mod is here. So this is the lever to open your fuel lid like in modern day cars. So once you trigger from there, this thing would open out. So nice construction here. This thing goes inside when that lever is pulled, and this cover, this panel pops out because of this spring, and you can lock it back. It won't open directly. Since we come here on this rear part, we can see this custom antenna also. This also, when the car is doing a flyby, or you're watching the car moving around with this long antenna, all this setup, this looks really beautiful. Now moving to all the lights, he's done custom LED job on all parts. So this is a ready-made headlight unit that has been purchased. Again, part 2 will have the night throw. This lights, trust me, have got very, very good throw. I saw it physically yesterday night. So 3 cheers to this part, that is mod that is done. I really love these lights, round lights. One, they are round and throw is very good. Secondly, they have got DRLs as well as indicators in it. Let me show you that. So this is how the DRL looks. Again, when the car is running on the road, this looks really beautiful. And this is how the indicator flashes in the DRL. When the indicator is flashing, the DRL turns off. It is on there because right now the indicator is not on उधर. तो इस साइड पे जब indicator जब भी जिधर भी on होंगे, the DRL will turn off and your indicator will start flashing. So this looks really nice, neat finish. And again, the parking also has got LED lights. So everywhere he's tried to use LEDs except for this one, which is halogen right now. But otherwise there are LEDs throughout the car. This is the throw of the headlight now. I mean, how the headlight illuminates. But again, throw के लिए do check out the night video. It has got low beam and high beam, both work. So all the spares that we have purchased from outside, from third party से जो भी लिया है ना, उनके links मैं क्या करूँगा, for example headlight हो गया, वो horn हो गया, वो mirror हो गया, इन सब के links है ना, I'll take it from the owner and keep it in the video का description. So this grill also is an finish in acrylic, but it has been laser cut. Same जैसे इस Fiat पे किया था, इसमें भी same पूरा किया हो गया. And this gives a very elegant look to the car. ये आप दूर से देखोगे भी तो भी बहुत neat and tidy दिखती है कार. One feature of this grill is because it is mirror finish, तो जहाँ पे भी खड़ी रहती है, जिसके भी सामने खड़ी रहती है, उसका कलर उसको आपको
सामने दिख जाएगा. तो इफ दिस कार इज फेसिंग दिस ऑरेंज फिएट, तो ये पूरा ग्रिल आपको ऑरेंज दिखेगा उसमें. अगेन दिस साइड ट्रिम इज ऑल्सो custom designed. He is personally done by Rohit. He personally does all this work. So these are in SS. My friend had it in aluminium. So that's the only difference. But design wise and all, everything is same. I'm sure now all of you guys are eager to hear the exhaust. So my friend Sandeep, who owns that car, is going to start. By the way, iske owner ka naam Harshad hai, and unka Instagram account is here. You can follow them over here. And this is RASN Designs who've done the car. And now let's hear the exhaust. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल एग्जॉस्ट. आई होप आपको एग्जॉस्ट पसंद आ गया रहेगा. अब जब पीछे आई गए हैं तो मैं आपको ये स्पेशल चीज़ दिखा देता हूँ. दिस इज़ अ वेरी 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 ओल्ड नंबर प्लेट एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ पीपल कैन रिकोगनाइज इट, बट दीज आर ऑल मेटल कटआउट्स. ये जो नंबर्स है, ये जो लेटर्स है MHM7717, ये जो नंबर्स एंड लेटर्स है, ये कस्टम कटआउट आते थे पुराने ज़माने में, हैंड मेड रहते थे. एंड इसको पीछे नट बोल्ट्स रहते थे. एंड इसको आपको मैं थोड़ा अगर दिखा पाऊँ तो पीछे आपको यू कैन सी नट बोल्ट्स बिहाइंड. तो ये नट बोल्ट्स से नंबर प्लेट पे बैठते थे. इसमें सिर्फ एडिशनल ऐसा किया है कि ये जो फ्रेम है उसको अच्छे से क्रोम फिनिश किया है एंड नंबर्स हैव बीन पेंटेड अगेन ब्लैक एंड ये वाइट बेस्ड ऑन आवर नंबर प्लेट कलर कॉम्बिनेशन दैट RTO रिक्वायर्स, उसके हिसाब से किया है. बट ये वही पुरानी नंबर प्लेट है, नंबर्स बहुत पुराने हैं. तो इसको रिस्टोर किया है रोहित ने बेसिकली फॉर दिस कार. फ्रंट पे भी सेम लेटर्स के सेम फैशन में, सेम लेटरिंग में यू कैन सी द नंबर प्लेट्स. सो पूरा सेम किया हुआ है. इसमें आई थिंक यू कैन ईजिली सी द नट बोल्ट्स बिहाइंड. सो ये पुराने ज़माने में ऐसे फिटिंग होता था. कोई ओल्डीज़ रहेंगे तो उनको पता रहेगा इफ़ यू रिमेंबर योर ओल्ड फिएट्स और बॉम्बे के टैक्सीज़ वगैरह, तो उसमें ऐसा आपको देखने को मिलता था. अभी तो बहुत रेयर है. अभी शायद ओनली 1 or 2 पीपल मेक दिस. आई थिंक बॉम्बे में ओपेरा हाउस के आसपास कोई बनाता है. दे चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 7-8 thousand फॉर दिस सेट नाउ डेज. नंबर प्लेट अगर आपको ऐसी सेम लेटरिंग में एम्बॉस पूरा जो लेटर पीस बाहर आता है वो करना है तो. अदरवाइज इफ़ यू हैव अ वेरी लॉन्ग नंबर प्लेट लाइक दिस, मतलब पूरा MH14 और ऐसा सब रहेगा, तो कॉस्ट गोज़ अप. सो दिस इज़ अबाउट दी नंबर प्लेट. So guys, that brings us to the end of part 1. I hope you like the video. If yes, do hit the like button and share कर देना video आपके friends, family में, those who would be interested to know more about this mods done or who would be interested more in this classic car. And if you're new on my channel, तो subscribe करने ना भूलेगा and don't forget to also check out the part 2.